Hello everyone. Today we are going to discuss two topics of Bryophyta, that is left mosses and liverwort. Both are the topics are the class of Bryophyta that we are going to discuss today. Mosses and liverwort you can see here in the picture. Mosses and liverwort both are given here. Mosses is given here and liverwort is given here. You can easily see the structure and the differences between their structures that we get here, that the uh, plant body as well as the these structures, the gametophytic structure, and these structure, the sporophytic structure, that we will discuss in the next pages. So we are going to start with the mosses. Now we will move for the next pages. Now here we are getting the first class, that is moss, in which we have given some point. Like we talk about the first point is location, soil, rock and tree, bark. तो अगर यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे जो लोकेशन हमें मिल जाती है कहाँ पे, सॉइल पे, रॉक पे, ट्री पे एंड बाग पे. These are the different location where we find easily the mosses. Mosses are grow in the form of just thallus-like structure, and thallus-like structure is just you can easily see in the diagrams that give diagrams or pictures that are given on this page. Here you easily find that the thallus or bryophytes grow over the log of wood, and here you will also find that the bryophytes, mainly mosses, grow over the rocky. So just like mate, they grow over the rocky structure or substratum of the ground or the log of wood, and this structure you also find. And the growth of the mosses in this way, they help in the formation of soil. That is our second point. हमारा सेकेंड पॉइंट है वो हमें बता रहा है कि जो मॉसेस हैं वो सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं. कैसे करते हैं? जस्ट लाइक वी कैन अंडरस्टैंड विद द स्कीमेटिक डायग्राम दैट आई गोइंग टू मेक ओवर द पेज. First of all, this is our rocky area where we will find that some of the mosses are grow over here. When they start growing over here, they start releasing some of the enzyme. That enzyme will break the rocky structure in fine particle. When these fine particles are washed away from over the rock, they go down the substratum and form the soil. So this way we can say that the mosses help in the formation of soil. Clear? Now we will proceed for the next point, in which we have given the colonized rocky site. So we mainly find that they are mainly colonized, and they are start growing over the rocky sites where the amount of water is pretty much. जहाँ पे भी वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा रॉकी एरियाज़ के आसपास, वहाँ पे हमें दिख जाएंगे. एंड वी कैन आल्सो सी अनदर पॉइंट दैट इज said to us, it also help in prevention of soil erosion. ये और एक हेल्प करता है हमारी किसमें, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में. सॉइल इरोजन क्या है, सिंपली अगर ये समझें तो सॉइल इरोजन क्या है, द वॉश अवे ऑफ सॉइल ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ वाटर, स्पीडली वाटर, और फ्लोइंग ऑफ स्पीडली विंड के फ्लो होने से, या जो है हम बात करें स्पीड से वाटर वहाँ से फ्लो करने से, अगर अपर सरफेस वॉश अवे हो जाती है, मूव ऑन हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे सॉइल इरोड हो गई. इरोड मीन्स कटाव होता है, ठीक. बट मॉसेस कैसे हेल्प करते हैं? मॉसेस दे विल ग्रो ओवर द सबस्ट्रेटम वेयर द large amount of water is present, or the rocky structure, and they grow over the substratum or rocky structure, and they anchor with the help of a rhizoid. They anchor the soil particle with the help of a rhizoid, and rhizoid help in anchoring. Due to the anchoring of the rhizoid, they do not move from one place to another place. Clear? तो यहाँ पे rhizoid क्या कर रहे हैं, वो एंकर कर रहे हैं. उनके एंकरिंग से क्या होगा कि सॉइल के पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, और सॉइल के पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तो अगर हैवी रेन भी होती है या विंड भी ब्लो करती है, तो जो है फर्स्ट कांटेक्ट किससे होगा, मॉसेस से होगा. देन सेकंड कांटेक्ट किससे होगा, सॉइल से होगा. तो इस वे जो है सिंपली दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन. नाउ ग्रो पैक टुगेदर इन डेंस कॉलोनीज. नेक्स्ट पॉइंट इज द grow packed together in dense colonies. So we can easily find in the diagram here that given on the page कि सिंपली जो हम देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में, वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि
जो मॉसेज हैं वो डेंसली पैक्ड हैं, डेंसली पैक्ड हैं, तो स्पेस बहुत कम है और स्पेस बहुत कम है। ये चीज़ हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पेज इन विच वी हैव गिवन द बॉडी ऑफ द मॉस, की बॉडी जो है मॉस की उसमें क्या क्या होगा। तो मेनली बॉडी जो होगी उसमें दो स्ट्रक्चर मेनली होंगे, एक थैलस होगा और एक राइजॉइड होगा। एक थैलस होगा, राइजॉइड। थैलस क्या बॉडी स्ट्रक्चर जो कि फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, जो क्या है फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, ग्रीनिश फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर जो मेनली फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड फॉर्म करेगा। सेकेंड स्ट्रक्चर जो हमें अपीयर होगा, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होंगे सबस्ट्रेटम एरिया में, या जो बिलो द एरिया से सिंपली हमारा जो है थैलस हो गया। यहाँ पे हमें जो है मिलेंगे क्या, हमें यहाँ पे टाइनी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और वो टाइनी स्ट्रक्चर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो मेनली इनका नेचर जो है अब्जॉर्प्टिव है, मीन्स दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द मटीरियल्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉयल। और सॉयल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉयल के अंदर प्रेजेंट है बेसिकली मिनरल प्रेजेंट है एंड वाटर प्रेजेंट है। और मिनरल जो है डिजॉल्व रुका वाटर में, तो वेन एवर दे अब्जॉर्ब वाटर दे आल्सो अब्जॉर्ब minerals. And another point also given here, they do not have true roots, stem or leaves। तो वो मेन प्लांट बॉडी की बात करें, इनके पास जो होगा थैलस और राइजोइड होगा, और अदर जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हम मानते हैं कि प्लांट में होते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी पॉइंट की, तो मैनी मॉसेस हैव सेपरेट सेक्सेस, मेल प्लांट्स एंड फीमेल प्लांट। तो हियर वी विल गेट द यूनिसेक्सुअल प्लांट इन द केस ऑफ मॉसेस, in which male plant or male thallus is separate to female thallus. That means here we will get only unisexual plant mainly, but in some cases we also get the bisexual in mosses category. And the next point and the most important point that asked many time in exam, that is the what is the dominant phase of bryophyte। So the dominant phase of the ब्रायोफाइट्स और मॉसेस और लिवरवुड इस गैमेटोफाइट। क्लियर। तो ये कई बार कई जगह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ में आता है, या हमारे जो स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हम पूछते हैं कि भैया कि डोमिनेंट फेज़ कौन सा है ब्रायोफाइट्स में। सो द डोमिनेंट फेज इज द गैमेटोफिटिक फेज, द डोमिनेंट फेज, एंड द sporophytic phase, which is the another phase of the life cycle of the bryophyte, which are dependent on the gametophyte. You can easily see in the diagram that is given here. You will find that this one is the this one is our gametophytic stage, and this one is the sporophytic. And you will also observe that the gametophytic phase is the photosynthetic phase that have the capability to make the food. But you can also observe here the sporophytic phase that is non-pigmented, yeah, less pigmented, and less perform the photosynthesis in very less amount, mainly photosynthesis performed by the gametophytic phase, and it totally depend for the water and other resources over the gametophyte. So we will complete this phase, and we will now move for the next phase, where we will study about the structure, other structure in the case of mosses. In the here we have given the two stages of the body. One is first stage and the second is second stage. First stage is known as the protonemal stage, second stage is known as protonemal stage. तो प्रोटोनिमल स्टेज में होता क्या है, वो अगर हम बात करें, डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, दैट इज ग्रीन क्रीपिंग ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो प्रोटोनिमा है वो ग्रो करेगा, किससे ग्रो करेगा। सो प्रोटोनिमा विल ग्रो विद द हेल्प ऑफ अ स्पोर। You can see here it is a spore, this is the spore, and when the spore germinate, a structure, creeping structure is arise from here, and this creeping structure and filamentous structure is known as primary protonema, known as primary protonema. And the primary protonema, in primary protonema we can also see the secondary structure that will start when a bud-like structure is arise from the lateral side, when a bud-like structure is arise from the lateral side, and this bud will grow from here to here, this way, and this form the secondary protonema. This will form secondary protonema, and protonema consists of right cylinder axis bearing spirally arranged leaf. क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पे, स्पायरली अरेंज लीफ फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। एंड यू कैन से दैट दिस विल वे दिस वे एंड दिस वे एंड दिस वे दे विल फॉर्म द लीफ।
Okay, so now we will proceed for the next point. It is attached to the soil through multicellular branch rhizoid. This bear the sex organ. उसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर होंगे यही क्या करेंगे, इनसे मल्टीसेलुलर राइजोइड अपीयर होंगे एंड दीज मल्टीसेलुलर राइजोइड help in the absorbing of salt and mineral, as well as we also find here the sex organ, male organ, that is antheridium, and the female organ, that is archegonium. क्लियर। तो अब जो यहाँ फर्स्ट गिवन हमें, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिस्कस करने हैं, दैट मीन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेगमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ मॉसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव part and then we will discuss about the reproductive part. In vegetative part we will see here we have given two different kinds of reproduction, ways of vegetative propagation, not the reproduction. One is budding and other is fragmentation. And in secondary protonema, so we will observe that the secondary protonemal structure may be detached from the main plant body and it will grow as a individual plant. That means it follows the fragmentation. क्लियर कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सेकेंडरी प्रोटीनिमा है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये कुछ टाइम क्या हो सकता है कि वो डिटैच हो जाएगा मेन प्लांट बॉडी से, एंड आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी इट विल grow, not die. That means it follows the fragmentation. Clear. And in the second case we will also see the budding, and in case of the growing of the secondary protonema we also already see the bud arise from the primary protonema later side, and these protonemal bud will grow and form a new plant. तो यहाँ पे सेकेंडरी के केसेस में हमने ये दोनों देख लिया, बडिंग भी देख लिया, फ्रेगमेंटेशन भी देख लिया. नाउ द नेक्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो हम डिस्कस करें अब यहाँ पे, द मॉस बॉडी. मॉस की बॉडी कैसी होगी और उस बॉडी में सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे. तो हमने बात तो की हुई है प्रीवियस वीडियो में. तो प्रीवियस वीडियो हमने बात क्या की थी, यही बात किया था कि जो मेल होंगे, मेल में एक स्ट्रक्चर होगा दैट इज़ नॉन एज एंथ्रीडियम, and antheridium form a biflagellated anthrozoid which is a sperm cell, and in case of archegonium, the structure is flask shaped structure which will form a single egg cell in their वेंटर में क्या होगा, एक सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. क्लियर. तो वी कैन टॉक हियर अबाउट द सेक्स ऑर्गन. Sex organs Antheridia and Archegonium produced on leafy shoot. Where they will found? They will found us over the leafy shoot. After fertilization, sporophyte develop into food, not the food. Here there is a mistake. Here are foot, seta, and capsule. These are the three different structures in which the sporophyte form. The spore formed by meiosis in capsule, and you can easily observe like this is the gametophytic structure. I'm going to make again by moving the pace. This is our gametophytic structure. This way, clear. Here the fertilization is occur and the sporophyte will form. Sporophyte will grow from this area. I'm going to change the color because the sporophyte is not pigmented color, in green color, and this will grow, and here another structure will form here, and that is known as capsule. So you can understand from here we have a gametophytic state, that is this structure is the gametophytic structure. This structure is gametophytic structure, clear, which grow, and after the reproduction, after the fertilization of or mating of anthrozoid and egg cell, another structure is arise from here, that is the food. Food will grow and penetrate inside the gametophyte to getting the supplies of food and water and mineral. Okay, and the seta will grow from here. Okay, after growth of seta, another structure is formed, that is capsule. Inside the capsule,
The spores are formed by the process of meiosis. By the process of meiosis, they are formed inside the capsule. After the formation of meiosis, capsule burst away, or in the most of cases we say this part is the operculum, and this will break down. And after the breaking down of this part, the spores are moved away in the air. Whenever they will get the favorable climate, like moisture, they will start growing in the same way that we is discussing start from the starting. Clear? So here we are going to complete our the first topic, that is moisture, and we will proceed for the next topic, that is liverwort. And we will today discuss and complete the another class of the bryophytes. Okay, so here we completed this topic, and we can see also here the examples which are given here. Like first example is the funaria, and the second is polytrichum, and third one is sphagnum. Clear? So these are the different different types or genus that we will get in the case of funaria class. Now we will moving for the our next class, that is liverwort. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिवर वर्ट में मेनली बात करें तो यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे सिंपली इजली ऑब्जर्व हो रहा है कि आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो। डॉर्सो वेंट्रल स्ट्रक्चर दिख रहा है। डॉर्सो या डॉर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर का मीन्स हो गया, जो भी बॉडीज होती हैं वो दो होती हैं, एक डॉर्सल पार्ट होता है, एक वेंट्रल पार्ट होता है। वेंट्रल पार्ट से हम बात करते हैं, हमारा वेंट्रल पार्ट हो गया, हमारा स्टर्नम साइड वेंट्रल पार्ट हो गया, बैकबोन साइड हो गया जो है डॉर्सल पार्ट हो गया। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रायोफाइट में लीवर वर्ड्स की बात करें, तो वी कैन नॉट एबल टू डिफाइन देयर डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट। सो हियर वी विल यूज बोथ द टर्म बोथ द टर्म इन कंबाइंड फॉर्म डॉर्सी वेंट्रल। क्लियर? तो यहाँ पे डॉर्सी वेंट्रल यूज़ कर ले रहे हैं। अ बॉडी दैट लैक रूट्स, स्टेम और लीव्स, तो यहाँ पे ना रूट मिलेगा, ना स्टेम मिलेगा, ना लीव मिलेगा। और ये हम ब्रायोफाइट करते हैं, हमें पता है ये चीज़, और प्रीवियस वीडियो देखी तो उससे ही पता चल गया होगा आपको। एंड द सेकेंड पॉइंट, लिवरवर्ट गेट देयर नेम फ्रॉम देयर लीवर शेप थैलस। तो इनका जो नेम मिला है कि यहाँ लीवर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर है थैलस है, उसका स्ट्रक्चर ही लीवर जैसा होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से है। एक तरह से ये है कि सिंपली थैली जो है इनका जो थैलस स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद ये वाला पार्ट जो है ये डिकम्पोज नहीं होगा, ग्रो करेगा। ये वाला पार्ट जो ये भी डिकम्पोज नहीं होगा, ग्रो करेगा। क्लियर? तो एक तो ये हो गया। दूसरा है जेमी कप या जेमा कप जो है, ये है जेमा कप। ये हमारा, जैसे हम बात करें, ये हमारा क्या जेमा कप है, या ये सिंपली यहाँ समझ सकते हो, ये जेमा कप एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होते हैं ओवर द थैलस। और ये क्या है, जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर ग्रीन, मल्टीसेलुलर, सेक्सुअल, बट इट इज डेवलप फ्रॉम द जेमा कप। जेमा कप से जो है सेक्सुअल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर ग्रो होते हैं, लेकिन जो जेमा कप है वो क्या है, असेक्सुअल स्ट्रक्चर है। ये क्या होगा, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी जर्मेट टू गिव द न्यू इंडिविजुअल। तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, जेमा कप फॉर्म हुआ, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स है। इसके फॉर्मेशन में कोई भी रिप्रोडक्शन का इन्वॉल्व नहीं है, बस थैलस पे क्या हो रहा है, अ काइंड ऑफ स्मॉल ग्रोथ हो रही है। दैट स्मॉल ग्रोथ लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द जेमा कप, एंड whenever these this gemma cup will detach from the plant body and get a favorable climate favorable climate, and it start growing over the land. Clear? तो ये जो है क्या है, हमारा वेजिटेटिव का कंप्लीट हो गया। एंड नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पेज वेयर वी विल डिस्कस अबाउट देयर reproduction. In sexual reproduction, male organ. In sexual reproduction, male organ and female organ either on the same or different thalli. So here we will get two ways. In the previous section we only get in the previous section, that is mosses, we will get the unisexual plant bodies, but in case of the liverworts we get both kind.
we get some of the genus are belong to bisexual species, और some of the genus belong to unisexual. और bisexual unisexual में क्या होता है? Bisexual में क्या होता है कि both the sexes, male and female organ, grow over a same thallus. Just like here you can say that this is the structure and this the structure, and this here you will get the male organ, here you will get the male organ, and here you will get the female organ. Clear? So you can easily observe that both the organ, male and female organ, are growing over the same thallus, और सेम थैलस पे ग्रो करें, दैट मीन्स दे आर बाइसेक्सुअल. और वहीं अगर ये दो डिफरेंट थैली पे ग्रो कर रहे हैं, वहीं अगर ये दो डिफरेंट थैली पे ग्रो कर रहे हैं, देन वी विल यूज द टर्म यूनिसेक्सुअल. दैट मीन्स द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर ग्रो आइदर ऑफ द थैलस. क्लियर? तो किसी एक पे मिलेंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे यूनिसेक्सुअल यूज़ करेंगे. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन after fertilization, the sporophyte is formed and differentiate into foot, seta and capsule. तो ये फूट, यहाँ फूट नहीं, फूट होगा यहाँ पे, एंड फूट, सीटा एंड कैप्सूल. तो वही चीज़ें जो अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था हमने, वही चीज़ यहाँ मिलेंगे हमें, कि जो स्ट्रक्चर्स होंगे क्या फॉर्म होंगे? फूट फॉर्म होगा, सीटा फॉर्म होगा एंड कैप्सूल फॉर्म होगा. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इन द नेक्स्ट पॉइंट, म्यूसिस परफॉर्म इन द कैप्सूल. तो वी ऑलरेडी डिस्कस इन द केस ऑफ मॉसल what is the structure of capsule and how what are the processes will be occur inside the capsule. तो कैप्सूल में क्या होगा? म्यूसिस पर फॉर्म होगा, म्यूसिस से क्या फॉर्म होंगे? स्पोर्स फॉर्म होंगे. एंड वेन एवर द कैप्सूल बस्ट एंड ओपन, द spore come out from the capsule, and with the help of air they will spread from one place to another place, and when they land over the substratum or over the ground, they start germinate if the water or moisture is available over the ground. Clear? So this way we will get the new individual in the case of ligovat. And here both the classes of the bryophytes over, and last page we are going to discuss the uses of bryophytes, कि bryophytes की uses क्या हैं, तो वो डिस्कस करते हैं. Here first of all we have given provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. जो भी herbaceous animals हैं, like here you have given a diagram of the deer. Clear? bird हो गया, animals हो गए, जो भी herbs consume करे, they can easily consume this. Next, species of sphagnum provide peat, first use, and second use packaging material for transshipment of living material. So there is two uses of sphagnum. First is they provide the peat. Peat is the material that can be used as a firewood. कि simply fire करने के लिए, cooking करने के लिए जो ट्राइब्स हैं वो लोग यूज़ करते हैं इसे. दूसरा, पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल. ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल में कैसे यूटिलाइज होंगे कि जो स्फैग्नम हैव अ कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. इस स्फैग्नम में क्या है कि दे हैव कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एंड दिस वाटर विल टेक मच टाइम टू इवेपोरेट. तो यहाँ इसकी कैपेसिटी क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो इवेपोरेटिंग रेट है या जो ड्राइनेस रेट है वो बहुत स्लो है. इस कारण ज़्यादा टाइम के लिए इसमें वाटर अवेलेबल रहेगा, तो हमें जो ऑर्गेनिक मटीरियल्स हैं या एनिमल्स हैं उनको ट्रांसशिप करना है फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशंस, तो उसके लिए हमें ये यूज़ करते हैं, उसके लिए बेटर है ये. सेकेंड, डिकम्पोज रॉक मैकिंग हेल्प फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. उसके साथ साथ ये आई स्टार्टिंग मोस्ट का था कि मॉसेस विल ग्रो ओवर द रॉकी स्ट्रक्चर एंड दे रिलीज सम एंजाइम दैट विल हेल्प इन decomposing the upper surface of the rock, and this will help in producing the fine particle over the rocks, and whenever these fine particles form, they will make the way for the growth of the higher plant. ये एक तरह से वे फॉर्म करेंगे कि ये जब इससे फाइन पार्टिकल वहाँ जाएंगे और फाइन पार्टिकल एक्यूमुलेट होंगे तो एक सॉइल फॉर्म होगी, और जब फाइन पार्टिकल की सॉइल फॉर्म होगी तो वहाँ पे जो हायर प्लांट्स है ईजिली वहाँ पे ग्रो कर पाएंगे. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट,
Mosses mosses form dense mat on the soil to reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. So at this point we also discuss in the case of mosses ki they will form a mat like structure over the ground, and they will reduce the quantity of speedy rain or speedy air. This will help in uh, preventing the soil erosion. So these are the uses of the bryophyte that here we concluded, and now we will end the class, and we will discuss in our next segment. We will discuss the next part of this chapter, that is pteridophyta. क्लियर? तो अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम जो डिस्कस करेंगे मेनली टेरिडोफाइटा डिस्कस करेंगे, और टेरिडोफाइटा जो है सेकेंड डिवीजन है प्लांट किंगडम की है. क्लियर? सो वी आर गोइंग टू कंक्लूड हियर. थैंक यू.